बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Oracle Apex 22.1 and ORDS 21.4 with database 19c pluggable in Windows 10 InshaAllah quickly। आज हमें सीखेंगे कि किस तरह से Oracle Apex 22.1 और ORDS 21.4 को database 19c pluggable के साथ Windows 10 में इंस्टॉल किया जाता है। जल्दी से first we will create folder in C drive with the name 19c_22.1। सबसे पहले हम C drive के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे 19c_22.1 के नाम का, और उस फोल्डर के अंदर मजीद दो फोल्डर बनाएंगे DB और ORDS के नाम के तरतीब। And under this folder we further create two folders with the name DB and ORDS respectively। Extract Oracle database 19c in DB folder which we have just created। एक्सट्रैक्ट करेंगे Oracle database 19c को DB के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है। Extract ORDS 21.4 in ORDS folder which we have just created, so we do not need to copy and paste ORDS folder। ORDS 21.4 के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे ORDS के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है। तो हमें ORDS के फोल्डर को कॉपी करके उसको चिस्पा करना नहीं पड़ेगा। Extract Apex 22.1 file in 19c_22.1 folder, so we do not need to copy and paste Apex folder। Apex 22.1 की फाइल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे 19c_22.1 के फोल्डर के अंदर, तो हमें Apex के फोल्डर को कॉपी करके उसको चिस्पा करना नहीं पड़ेगा। Apex 22.1 की जो डाउनलोडेबल फाइल है उसका नाम जो है वो ये है। The downloadable file of Apex 22.1 name is this one। Furthermore, we have the downloadable link for Oracle database 21c, ORDS 21.4 and Apex 22.1। However, we have already downloaded all the softwares। डाउनलोडेबल लिंक जो है Apex 22.1 और ORDS 21.4 के मौजूद है, अलबत्ता हमने इनको पहले ही डाउनलोड कर लिया है। The Java version which we are using is Java 8 update 211। जो जावा का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो Java 8 update 211 है। Run database setup with administrator rights। डेटाबेस का सेटअप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से। Option will be create and configure a single instance database। Hit next button। Option create and configure a single instance database का रहेगा। Next का बटन दबाएंगे। Option will be desktop class। Hit next button। Option जो है वो desktop class रहेगा। Next का बटन दबाएंगे। Option will be use Windows built-in account। You can use other option as well। Hit next button। use Windows built-in account का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, आप कोई दूसरा ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट का बटन दबाएं। Assign global database name, password, confirm password and pluggable database name from your choice and hit next button। ग्लोबल डेटाबेस का नाम देंगे, पासवर्ड देंगे, कंफर्म पासवर्ड देंगे
और प्लगेबल डेटाबेस का नाम देंगे अपनी मर्जी से और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। यस, नाउ वी विल हिट इंस्टॉल बटन। अब हम इंस्टॉल का बटन दबाएंगे। Oracle Database 19c has installed at close button. Open command prompt and reach where apex folder is available. Command prompt खोलेंगे, वहाँ जाएंगे जहाँ apex का folder मौजूद है और वहाँ जाने के बाद ये कमांड चलाएंगे। When we reach there, run this command. Connect with SSDBA. Connect होंगे SSDBA से। Check SDA maximum size by running show parameter SDA command. If it is less than 3000 MB, then we have to increase it. SDA maximum size पता करेंगे show parameter SDA की कमांड चला के। अगर वो 3000 MB से कम हो तो हम उसको बढ़ाएंगे। तो ये 3000 MB से कम है। It is less than 3000 MB. Check pluggable database status by running this command. If it is in read-write mode, then we will save its state. In case if it is not in read-write mode, then we will change its status into read-write mode first and then save its state. अब हम pluggable database की state को देख रहे हैं कि वो रीड राइट मोड में है या नहीं है। अगर वो रीड राइट मोड में है तो हम उसकी हालत को महफूज कर लेंगे। अगर वो रीड राइट मोड में नहीं है तो पहले हम उसको रीड राइट मोड में लेके आएंगे और फिर उसकी हालत को महफूज करेंगे। तो ये रीड राइट मोड में है। इट इज इन रीड राइट मोड। नाउ वी आर सेविंग इट्स स्टेट। अब हम इसकी हालत को महफूज कर रहे हैं। The advantage of saving state is that when we shut down database and start it again, so the pluggable database will remain in read-write mode. Pluggable database की हालत को महफूज करने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम database को बंद करते हैं और उसको दोबारा चलाते हैं तो pluggable database जो है वो read-write mode में ही रहता है। Now we will shut down database by running shut immediate command. अब हम database को बंद कर रहे हैं shut immediate की कमांड चला के। Now we will start check SDA maximum size again in order to make sure that the changes we did has reflected or not. अब हम दोबारा SDA maximum size पता कर रहे हैं ताकि तसल्ली कर लें कि जो तब्दीली हमने की है वो हो चुकी है या नहीं। तो जो तब्दीली हमने की है वो हो चुकी है। The changes we did has reflected. Now we will run this command show PDBs. We run this command before every Apex script in order to make sure whether we connect with pluggable database or not. If we connect with a pluggable database, we can move forward. If not, then we have to connect with pluggable database first while running this command and then run Apex script. And when we are connecting with a pluggable database, we make sure that session altered appear.
If not, then we have to connect with sys user again. अब हम show pdbs की कमांड चला रहे हैं. show pdbs की कमांड हम तमाम एपेक्स के स्क्रिप्ट्स को चलाने से पहले चलाते हैं ताकि ये तसल्ली कर लें कि हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हैं या नहीं. अगर हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हैं तो हम एपेक्स का स्क्रिप्ट चलाएंगे. अगर हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट नहीं है तो पहले हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट होंगे ये कमांड चला के और फिर एपेक्स का स्क्रिप्ट चलाएंगे. और जब हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हो रहे हो तो हम ये तसल्ली कर लें कि सेशन ऑल्टर्ड लिखा हुआ आया. अगर सेशन ऑल्टर्ड लिखा हुआ नहीं आया तो हमें दोबारा सिस के यूजर से कनेक्ट होना पड़ेगा. अब हम एपेक्स को इंस्टॉल कर रहे हैं ये कमांड चला के. नाउ वी आर इंस्टॉलिंग Oracle Apex 22.1 has installed. Oracle Apex 22.1 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है. Now we will run this command. User will be admin. Provide email and password from your choice. अब हम ये कमांड चलाएंगे. यूजर जो है वो एडमिन रहेगा. ईमेल और पासवर्ड आप अपनी मर्जी से दे दें. Now we will run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे. Now we will run this command and provide password for Apex listener and Apex first public user, which will be Oracle in lowercase. अब हम ये कमांड चलाएंगे. पासवर्ड देंगे Apex लिस्नर और एपेक्स फर्स्ट पब्लिक यूजर को. जो कि ऑरिकल लाएगा छोटे ऑप्शन में. एग्जिट दिस कमांड फॉर्म. इस कमांड फॉर्म को बंद कर दें. ओपन न्यू कमांड फॉर्म विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स. नया कमांड फॉर्म खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स से. वहां जाएंगे जहां ORDS का फोल्डर मौजूद है. and reach where ORDS folder is available. And when we reach there, run this command. जब हम वहां पे पहुंच जाएंगे तो फिर ये कमांड चलाएंगे. Now we will provide a configuration path where we want to configure ORDS. अब हम कॉन्फ़िगरेशन का बता देंगे. Enter. If your port is 1521, then hit enter button. If your port is different, then define your port and hit enter button. अगर आपकी पोर्ट 1521 है तो आप एंटर का बटन दबा दें. अगर आपकी पोर्ट मुख्तलिफ है तो आप अपनी पोर्ट लिखें और फिर एंटर का बटन दबाएं. To find your port, navigate to Oracle ORDB19 Home 1 Expanded. अपनी पोर्ट पता करने के लिए Oracle ORDB19 Home 1 में आएंगे. इसको खोलेंगे. नेट मैनेजर पे आएंगे. इसको खोल लेंगे. नेट मैनेजर पे आएंगे. इसको खोल लेंगे. एंटर. नाउ प्रोवाइड प्लगेबल डेटाबेस नेम. प्लगेबल डेटाबेस का नाम देंगे. एंटर. Provide password for ORDS public user, which will be Oracle in lowercase. पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे ORDS public user को, जो कि Oracle लाएगा छोटे वर्फों में. Provide password and confirm password for ORDS public user, which will be Oracle in lowercase. Administrator username will be sys. Provide password and confirm password, which you provide during Oracle database installation. Administrator username जो है वो sys रहेगा. पासवर्ड और confirm पासवर्ड हम वो देंगे जो हमने Oracle database की इंस्टॉलेशन के दौरान में दिया था. Enter.
Provide password and confirm password for Apex public user which will be Oracle in lowercase. Password और confirm password देंगे Apex public user को जो कि Oracle लाएगा छोटे हरफों में. Enter. Provide password and confirm password for Apex listener and Apex REST public user which will be Oracle in lowercase. Password और confirm password देंगे Apex listener और Apex REST public user को जो कि Oracle लाएगा छोटे हरफों में. Enter. Now copy images folder from the Apex installation folder. Copy करेंगे images के folder को Apex के installation folder में से. And enter. Now provide a path to Apex static resource location till images folder. अब हम Apex static resource location को पता देंगे images के folder तक का. Enter. Provide port from your choice or leave it as it is. आप port दे दें अपनी मर्जी से या इसको ऐसे ही रहने दें. When Oracle less data services initialize appear, we can access Oracle Apex 22.1. Furthermore, do not close this command prompt because if it closed for any reason, we cannot access Oracle Apex 22.1. But we can reopen it as well. जब Oracle less data services initialize लिखा हुआ आ जाएगा तो हम Oracle Apex 22.1 को इस्तेमाल कर सकेंगे. ये बात याद रखिएगा कि इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद मत करिएगा क्योंकि अगर ये किसी भी वजह से बंद हो जाएगा तो हम Oracle Apex 22.1 को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. अलबत्ता Oracle Apex 22.1 and ORDS 21.4 with database 19C Pluggable has installed in Windows 10. Oracle Apex 22.1 और ORDS 21.4 database 19C Pluggable के साथ Windows 10 में इंस्टॉल हो चुका है.